Hi guys, welcome back to my YouTube channel, or welcome if you're new. I am Avni, and in today's video we are going to talk about how to develop a reading habit, and I'm also going to suggest five thriller books that I absolutely loved. And these are the books that I hope will get you into developing that reading habit. So let's begin. Well, I know कि रीडिंग सुन के बहुत लोगों को लगता है कि लाइक यार इट्स नॉट अ लीजर एक्टिविटी. पीपल थिंक इट्स एन एक्टिविटी जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एंड नॉट मेनी पीपल think it's enjoyable, which is totally false, and it's mainly because they have not found their type of genre. So I'll tell you my story कि मैंने कैसे ये reading as a habit pick up किया. So my mom played a huge role in that. She used to introduce me to books जब से मैं बहुत छोटी थी. Like she used to get me those नॉडी के books, फिर उसके बाद Disney princesses के story books, पंचतंत्र. Like since I was a kid, she introduced me to books. And उसके बाद I remember my first actual set of books I purchased were एनिड ब्लाइटन के मिस्ट्री सीरीज. सो मिस्ट्री सीरीज करके उसका एक 15 बुक्स का सीरीज है ऑफ लाइक 15 अलग अलग स्टोरीज, एंड ईच इन्वॉल्व अलग अलग मिस्ट्रीज. एंड आई रेड देम ऑल, आई बॉट देम ऑल. मतलब आई स्टार्टेड विद 3, मतलब my mom got me a set of 3 books, and I finished them so quickly because they were so good. And I think I was in 5th standard जब मैंने वो पढ़े थे, and I got addicted to those books. So मैंने बाकी के 12 बुक्स खरीद लिए ऐसे धीरे धीरे पैसे जमा करके. And then I read them all. I still have those 15 books with me. And it is मतलब उधर से मेरा love, and I got to know कि mystery या thriller are is my genre. And ऐसा नहीं कि मैंने बाकी try नहीं किया. um, I read autobiographies. I read a lot of self-help books. I read romance novels. I read sci-fi. I also read horror. But none of those, मतलब वो read करते वक्त मुझे मजा नहीं आया. So I realized कि my favorite genre is thriller slash mystery. So I stuck to that. So yeah, so that's how my journey began. I think some of you will relate with me when I say कि the Wattpad phase was such a huge phase of, I think, a lot of girls' lives back in, I would say 2012 to 2016 ish. वो period में Wattpad boomed. And Wattpad, so if you don't know what Wattpad is, it was basically an app जो अभी भी है, but अभी I don't think उसका उतना craze है. But back then it was a huge craze. It's an app जहाँ पे you can, मतलब people like you and me, we can write books of whatever genre of whatever story, and people like you and me can read those books. So matlab, so these are not published books, these are not published authors, they are just random people like us who write books and random people like us who read those books. And mostly उसपे romance genre के books ज़्यादा है. And so that's how, मतलब romance मैंने mostly उधर से ही पढ़ा था. I never bought romance books and read it. मतलब I have a couple of them, but like I said, that did not work for me. तो मैंने वो ज़्यादा पढ़ा ही नहीं. I didn't go deep into it. But हाँ, so Wattpad was another source for me to get into reading. There was that time जहाँ पे मैं बहुत books पढ़ती थी Wattpad पे. Not just Wattpad पे, but मैं physical books भी बहुत पढ़ती थी. And क्योंकि तभी टाइम भी होता था मतलब स्कूल में होते थे. There was not much to do after school, after homework. So I used to read a lot of books. But then धीरे धीरे as life moved on, I got busy with my CA studies and all of that. And then there was a lot of time period जहाँ पे मतलब एक बड़ा सा gap आ गया था जहाँ पे मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. Even though back of the mind में मेरा हमेशा होता था कि नहीं यार, मतलब I need to have a book in my hand. I need, because that sort of, मतलब ना, once you get into that reading habit, reading phase, वो एक sort of, it becomes your escape from reality, because you get into that मतलब I don't know about you, but me, I visualize everything in my head. So I, मतलब मैं वो character बन जाती हूँ, and then I am in another reality when I'm reading a book. So that becomes my escape. तो वो I was craving a lot during that time, but time ही नहीं मिलता था तभी, because the CA studies and classes and articleship itself used to take up my entire day. तो तभी बिल्कुल भी time नहीं मिलता था. So
ऑलमोस्ट आई वुड से 6-7 साल तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था बीच में। एंड देन अभी रिसेंटली since a year or two, I picked up that habit again and I am absolutely enjoying it. So, okay, I'm sorry about ranting so much. ये मेरा plan नहीं था, मैंने pointers बनाए हैं and I'm going to now go into those. So, tip number 1 is start small. You don't have to commit कि मैं एक हफ्ते में एक बुक पढ़ लूंगा या एक दिन में 50 पेज पढ़ लूंगा। नो, मतलब मैंने खुद से आई हैव ट्राइड दैट, लाइक आई हैड केप्ट अ टारगेट कि दिन के 100 पेजेस आई वुड रीड, बट वो नहीं होता है। मतलब if you are enjoying a book, then you might read more than that. If you're not, then you might not even get to 10 pages a day. And having that sort of target is not, it's it's very restrictive, it's very binding. That is not how you pursue a hobby, yeah, that is not how you pursue your leisure time. So I would suggest कि start small, don't keep a target. अगर target रखना भी है तो keep a target of say 5 to 10 pages a day, उतना तो पढ़ ही सकते हो। एंड अगर नंबर ऑफ बुक्स का टारगेट रखना है, लाइक आई वुड रीड 1 book a week, ऐसा टारगेट मत रखो। या इफ यू से आई वुड रीड 50 books a year, that becomes very unrealistic. अगर टारगेट रखना ही है तो यू कैन स्टार्ट विथ रीडिंग 1 book per month, क्योंकि वो आराम से कंप्लीट हो जाता है। अब 1 book ऑन एन एवरेज हैज लाइक 300 पेजेस, तो आराम से इवन इफ यू रीड 10 पेजेस अ डे, यू कैन कंप्लीट अ बुक इन अ मंथ. So have that sort of a target if you want to keep a target, but my main suggestion is कि target मत रखो, because it's not a goal to achieve. मतलब it's just a habit, it's just a relaxation. तो उसमें क्या target रखना है? Then tip number 2 is read what interests you. Don't run behind the classics कि मुझे ये पॉपुलर है मैं ये पढ़ूंगी, या ये मतलब others are reading this तो I should also read that. No, मतलब it depends from person to person. अगर if you're not liking it, you're not liking it, it's okay. If one thing feels boring, then try other. मतलब अगर like for example मैंने जैसे बताया कि मैंने sci-fi रीड किया, अभी मुझे याद भी नहीं, एक बुक आई हैड रेड, बट वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. सो आई जस्ट स्टॉप रीडिंग फ्रॉम दैट जॉनर बिकॉज आई रियलाइज कि वो it's not my cup of tea. So you have to keep on trying until you find your cup of tea. Tip number 3 is don't just rely on physical books. You can rely on audiobooks as well as things like Kindle. मेरा बेसिकली ये मानना है कि बुक्स जब तुम पढ़ते हो, इट शुड बी अ फिजिकल बुक, बिकॉज वो फिजिकल बुक का अलग ही मजा है. एंड योर एंटायर पॉइंट ऑफ रीडिंग अ बुक इज टू गेट अवे फ्रॉम द स्क्रीन टाइम, राइट? सो अगर तुम किंडल पे पढ़ रहे हो या आईपैड पे पढ़ रहे हो या फोन पे पढ़ रहे हो, तो दैट जस्ट मतलब दैट मेक्स नो सेंस ऑनेस्टली. बट एट द सेम टाइम आई एम करंटली रीडिंग माई बुक्स, जो भी मैं अभी फिलहाल पढ़ रही हूँ, ऑन आईपैड ओनली, बिकॉज अभी किसके पास टाइम है टू गो एंड बाय a new book every time, because I am finishing one book in on an average say 2 weeks to 3 weeks. Okay, तो एक बुक मेरा 3 वीक में खत्म हो जाता है पढ़ के. तो हर 3 वीक में मैं कहाँ नया बुक लेने जाऊँ? इट्स नॉट फाइनेंशियली फीजिबल ऑल्सो, एंड फिजिकली मेरे पास जगह भी नहीं है टू कीप ऑल ऑफ दोज बुक्स. तो इसलिए आई रिजॉर्ट टू रीडिंग ऑन आईपैड. So that is also one thing that you can do. You can read on your mobile पे. I won't suggest because वो बहुत छोटा screen हो जाता है. तो get a Kindle or something like that. और ऑडियो बुक्स इज अनदर थिंग जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ट्राई इट, बिकॉज मेरा अटेंशन स्पैन इज नॉट दैट ग्रेट. मतलब आई कैन नॉट. ऑडियो बुक्स के लिए नॉर्मली पीपल लिसन व्हेन दे आर ड्राइविंग टू वर्क या डूइंग सम हाउस होल्ड काम एंड बैकग्राउंड में वो चालू है. आई कैन नॉट डू दैट. मतलब इफ आई एम रीडिंग अ बुक, इफ आई एम इनटू अ बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक शुड बी रेड नॉट हर्ड. दैट्स माय वेरी फर्स्ट थिंग. सो या तो तुम फिजिकल पढ़ो या तो तुम डिजिटली पढ़ो, बट यू हैव टू रीड अ बुक. हाउ कैन यू लिसन टू? आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट फैक्ट. एंड सेकेंडली मेरे से होगा ही नहीं कि मतलब अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ या अगर मैं घर के कुछ काम कर रही हूँ, तो माई माइंड हैज इट्स ओन वॉइस, माई माइंड वॉन्डर्स पूरे दुनिया भर. तो आई कैन नॉट लिसन टू a book and do something else. Matlab that's just not how I can work. But if it works for you, then that's great, because that's another option. अगर तुमको पढ़ना नहीं तो that is another way to at least get into that habit या make yourself accustomed to reading. Tip number 4 is pair reading with a habit.
तो फॉर एग्जाम्पल मैं ना बहुत टाइम तक करती थी कि सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट करती थी तब मैं वॉटपैड, जब मेरा वॉटपैड का फेज होता था तब की बात है, बट मैं सुबह ब्रेकफास्ट करते करते वॉटपैड में बुक या एक चैप्टर पढ़ लेती थी। तो आई यूज टू पेयर ब्रेकफास्ट विथ रीडिंग। तो ऐसे यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सपोज ऑडियो बुक सुनना है, लाइक आई सेड कि ड्राइविंग करते हो तो सुन लेना, या फिर अगर पढ़ना है रात को तो नाइट टाइम रूटीन के साथ तुम पढ़ सकते हो। लाइक यू कैन पेयर रीडिंग विद द हैबिट सो दैट इट बिकम्स well ingrained into your routine life, and you don't have to specifically set aside a time for it. Tip number 5 is use a 2-minute rule. The 2-minute rule is basically कि दिस इज फॉर वेरी 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 बिगनर्स, ओके, जिन्होंने एक भी बुक पढ़ा नहीं है उनके लाइफ में, उनके लिए ये टिप है कि तुम बस 2 मिनट का टाइमर लगा दो फोन में और बोलो कि ये 2 मिनट का टाइमर जब बंद हो जाएगा, मतलब वो 2 मिनट तक यू हैव टू रीड अ बुक विच एवर बुक यू लाइक, एंड वो 2 मिनट का टाइमर जब एंड होगा यू क्लोज द बुक एंड कीप इट असाइड। स्टार्टिंग में क्या होगा कि यूल डू दैट, 2 मिनट का टाइमर हो गया, बंद करके रख दिया, बट जैसे जैसे यू गेट इनटू द स्टोरी, यू स्टार्ट लाइकिंग द स्टोरी, वो 2 मिनट का टाइमर बंद करके भी यू विल कीप ऑन रीडिंग, बिकॉज दैट्स हाउ गुड बुक्स होल्ड यू, दे डोंट लेट यू क्लोज देम, so that is how you can get into the reading habit. So tip number 6 is the last tip, which I don't follow, but if it works for you, it works for you, is you don't have to complete an entire book. So it means कि अगर तुमने एक बुक ले लिया and if you're not liking it, से तुमने 50 पेज पढ़ लिया and you're like it's not engaging me, like I said कि good books hold you, अगर वो तुमको नहीं लग रहा कि ये बुक मुझे पकड़ के रख रहा है, अगर यू आर जस्ट ड्रेडिंग इट, यू आर लाइक अरे यार अभी तो सिर्फ 50 पेज हुआ है, अभी मुझे और 300 पेज पढ़ना है, इफ दैट इज हाउ यू आर फीलिंग व्हिल रीडिंग अ बुक, देन दैट बुक इज नॉट फॉर यू, देन यू जस्ट हैव टू abandon that book and pick something else. मैं ये नहीं कर पाती for some reason I cannot abandon a book, I cannot abandon a movie midway or even a series midway. तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने अक्खा लाइक 9 सीजन एंड एवरी सीजन हैविंग 20 एपिसोड्स, इतना बड़ा सीरीज भी देख लिया है इवन तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, इवन तो मैं आई वाज लिटरली ड्रेडिंग कि अरे यार और 8 सीजन बाकी है, बट आई हैव कंप्लीटेड इट बिकॉज माई ब्रेन, I don't know. I have no justification for it, but my brain doesn't let me. For some reason, it makes me feel so guilty कि you are abandoning this, and also because मेरे दिमाग में चलता है कि what if it gets better? तो I keep on waiting for it to get better, but then you know 9 सीजन खत्म हो जाते हैं, सीरीज फिनाले आ जाता है, and it just does not get better. But yeah, so I cannot abandon a book. I remember. Okay, so the example, The Da Vinci Code is also one of the classics. मैंने उठाया because I was like, देखते हैं इतना, मतलब it's a very well talked about book. तो I was like, let's see कि इतना क्या craze है. I hated it. I could not, मतलब मैंने complete किया क्योंकि like I said मैं बीच में नहीं छोड़ पाती. I मतलब it took me 8 months to complete that book. Can you imagine? लिटरली मैं उठाती थी, मैं रोज 10 पेज पढ़ के बंद कर देती, आई वॉज लाइक मेरे से नहीं हो रहा, बट आई ऑल्सो कुड नॉट अबैंडन इट, विच इज वेरी रॉन्ग एंड यू शुड नॉट डू दिस. ओके, इफ यू आर नॉट लाइकिंग अ बुक, डोंट वेस्ट योर टाइम, पिक समथिंग एल्स अप. आई डोंट नो व्हाई आई कुड नॉट डू इट, बट इट टुक मी 8 months टू फिनिश दैट बुक, एंड मेरे को तो अभी स्टोरी भी याद नहीं बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक. बट या, सो anyway, these are the 5-6 tips for you to get into the reading habit. And now this is the fun part where I'm going to suggest 5 thriller books, because thriller, like I said, is my genre, and these 5 books are so good. मैं मतलब मैं तो रख ही नहीं पा रही थी उसको, मतलब I could not keep it aside, it was so good. मेरे पास टाइम नहीं था, but if होता तो मैं एक सिटिंग में ये सारे बुक्स कंप्लीट कर पाती, बिकॉज दीज बुक्स आर सो गुड, दे आर वेरी फास्ट पेस्ड, एंड वो जो थ्रिलर बुक्स में जो वो एक किक मिलता है ना, वो जो क्लाइमैक्स का सीन होता है, इट्स सो गुड, एंड दीज बुक्स आई गारंटी विल लीव यू फीलिंग like what the fuck, what just happened? So okay, so let me just get into my list. Number 1 is Never Lie by Frida McFadden. ये बुक बहुत पॉपुलर हो चुका था. आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट दिस बुक थ्रू माई इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड बेस्ट सेल क्रॉसवर्ड में जाती थी वो, बेस्ट सेलर्स में नंबर 1 पे होता था, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज सो, मतलब
क्या है, एंड आई रेड द सिनॉप्सिस एंड इट जस्ट हुक्ड मी। तो मैंने वो पढ़ लिया एंड माय गॉड इट इज 10 on 10। आई गिव यू अ सिनॉप्सिस, ठीक है। सो बेसिकली उसमें होता है कि एक न्यूली वेड कपल होता है, दे आर हाउस हंटिंग करते टाइम उनको एक मतलब दे विजिट अ मैंशन एंड उधर दे आर सपोज टू मीट देयर रियल्टर, बट उस दिन स्नोस्टॉर्म आ जाता है तो वो आती नहीं है एंड दे गेट स्टक क्योंकि वो स्नोस्टॉर्म है। इट्स अ वेरी इट्स मतलब हाईवे से बहुत अंदर की तरफ होता है एंड इट्स अ वेरी अबैंडन्ड मैंशन। ओके, यू कैन ऑलरेडी सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस। एंड दे आर स्टक इन दैट मैंशन एंड सो दैट मैंशन बेसिकली इज ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट, अ डेड साइकाइट्रिस्ट। एंड उस मतलब वो जो मेन कैरेक्टर होती है उसको ना सो द साइकेट्रिस्ट मेंटेन्स टेप्स ऑफ एवरी पेशेंट्स जिनके साथ उसका सेशन हो चुका है। तो वो जो मेन कैरेक्टर है उसको वो टेप्स मिलते हैं एंड शी स्टार्ट्स लिसनिंग टू दोस टेप्स एंड वेरी वियर्ड थिंग्स कीप हैपनिंग इन द हाउस एंड देन दे रियलाइज दैट दे आर नॉट अलोन। It's a very, very, very good book. You will not expect the climax and the start मतलब chapter 1 से I was मतलब it's not horror, okay, rest assured, because horror मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि I am a very scaredy cat but it's very close to horror and first chapter see it literally just it was so engaging. Please, please, please give it a read. Book number 2 is The Only One Left by Riley Sager. I don't know how to pronounce the last name, but this is the book जो मैंने अभी अभी खत्म किया, like I would say 1 week back. My God, I was, dude, the twists kept on coming and coming and coming. It was so good. I just मैं कुछ ज्यादा बता भी नहीं मतलब मेरे को तो इस बुक के बारे में सब बताना है। I want to tell you the entire story, but of course I will not. I'll just give you this much. So there is a so in the 1980s या 60s के टाइम पे sometime back then there was a very rich family, मतलब husband wife and उनके 2 बेटियां एंड उन वो टाइम पे और मतलब 4 ऑफ देम में से 3 लोगों का मर्डर हो जाता है एंड ओनली वन मतलब वो बेटियों में से एक बेटी बचती है एंड शी इज मतलब लोग मतलब पीपल accuse her of being a murderer, but because of lack of enough evidence she is not actually committed to jail. So वो अभी के टाइम पे शी इज समथिंग 70 या 80 year old grandma who is living there, but she is पैरालाइज्ड एंड उसके लिए एक केयर टेकर असाइन होती है एंड वो घर में बेसिकली वो अकेली वो ग्रैंडमा रहती है एंड थोड़े बहुत शेफ एंड हाउसकीपर वगैरह थोड़े बहुत 3-4 सर्वेंट्स रहते हैं एंड अ केयर टेकर हु गेट्स असाइन टू हर। सो जो वो केयर टेकर है शी इज लाइक एंड जो वो ग्रैंडमा है शी लाइक आई सेड कि शी इज पैरालाइज्ड एंड एवरीथिंग, सो शी कांट टॉक, शी कांट डू एनीथिंग, शी कैन ओनली मूव हर लेफ्ट हैंड, बट वो भी एकदम लाइक 10% ऑफ अ नॉर्मल कैपेसिटी। तो वो जो केयर टेकर है शी ट्राइज टू फाइंड आउट कि एक्चुअली उस रात को क्या हुआ था, मतलब जिस रात को ये 3 लोग का मर्डर हुआ था, डिड दिस ग्रैंडमा पर्सन ओनली मर्डर देम और वाज शी फ्रेम्ड फॉर इट। एंड सो वो पूरा उसके ऊपर है वो स्टोरी एंड इट इज वेरी लाइक आई सेड इट्स द ट्विस्ट्स आर बैक टू बैक, इट्स सो गुड, प्लीज यू हैव टू रीड इट। थर्ड बुक इज ऑल्सो बाय फ्रीडा मैकफadden जिसका मैंने फर्स्ट मतलब नेवर लाई सजेस्ट किया था। दिस वन इज कॉल्ड वन बाय वन एंड अगेन आई थिंक दैट ऑथर इज जस्ट फिनोमिनल। She can write stories that just hook you from chapter 1, right? Like not even chapter 1, just from the first page itself, because this book mein it's like a group of friends, they rent a lodge in a very रिमोट एरिया, ठीक है, क्योंकि ऐसा वीकेंड गेट अवे उनको ऐसे ही वीकेंड पे जाना था एंड बट द थिंग इज जब वो जाते रहता है तो ऑब्वियसली सिंस इट्स इन अ रिमोट एरिया उनका सेल सर्विस जाता है एंड देन द car breaks down. You can again see where I'm going with this. So they cannot even find where the lodge is because उनके पास वो मैप पे ढूंढते रहते हैं and then one person has a compass and then they try to navigate where the lodge is फिर and one by one each of them starts dying and obviously ग्रुप में से एक किलर है तो who is that killer and why is he or she killing the others, वो सब it's a very again this book is very fast paced, like right from chapter 1 things start happening and I would say कि थोड़ा बहुत आइडिया मुझे आ गया था एंड तक मतलब वो क्लाइमैक्स तक पहुंचने के पहले कि कौन हो सकता है किलर,
बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी इंट्रीग टू नो कि किलर अगर इवन पता चल गया बट क्यों वो मार रहा है, वो तुमको कैसे पता चलेगा? मतलब it's a very, like I said, it's a very fast paced book and it's a very short read. I think ऐसे ही कुछ 250-300 पेजेस का है, वो तुम आराम से like one sitting में खत्म कर सकते हो. This is my third recommendation. The fourth book is The Last Passenger by Will Dean. ये book मैंने अब तक I think 5-6 लोगों को recommend कर लिया है. And this book is another book जिसमें I was like, मेरे को पता चल गया था कि क्या हो रहा है, बट ये नहीं पता चला था कि क्यों हो रहा है. बिकॉज इट इज सो, मतलब एंड वो तुमको एंड तक पता नहीं चलेगा. इट इज लाइक, मतलब इट्स वेरी वेरी गुड बुक. उसमें क्या होता है कि एक कपल है जो जाता है एक बड़े से क्रूज पे फॉर अ वेकेशन. तो चैप्टर 1 में ऐसे बताया है कि वो क्रूज इतना बड़ा है, 2000 लोग हैं ऑन बोर्ड एंड लाइक क्रूज को डिस्क्राइब किया है, ठीक है. चैप्टर 2 में द कपल में से जो हस्बैंड वाइफ है, वो चैप्टर 1 में जाते हैं सोने को कि वन फर्स्ट डे इज ओवर. चैप्टर 2 में द वुमन वेक्स अप एंड उसको उसका हस्बैंड नहीं दिखता है बाजू में बेड पे. तो शी सर्चेस द रूम, सर्चेस द गैलरी वगैरह, कहीं पे नहीं मिलता है. तो शी से मतलब उसको लगता है कि वो शायद ब्रेकफास्ट करने गया हो. तो वो जाती है बाहर टूवर्ड्स दी ब्रेकफास्ट डाइनिंग एरिया. एंड जैसे जैसे वो चलती है शी स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड हर एंड देन धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि वो क्रूज पे कोई नहीं है एंड शी इज अलोन ऑन द एंटायर क्रूज. लाइक इतना बड़ा क्रूज जहाँ पे कल के दिन पे 2000 लोग थे, आज उधर कोई नहीं है एंड शी इज द ओनली वन देयर. एंड दैट इज सच अ गुड हुक. My God, you have to read it. It's also such a great book. And my last recommendation is The Silent Patient by Alex Michaelides. ये book मेरे पास actually physical copy है, बाकी चारों books तो मैंने iPad पे पढ़े हैं. But this book is again ऐसा book जिसका twist तुम you cannot see it coming. मतलब वो जो जब hit होता है तब you are like oh my God what. क्योंकि so basically इसका story ऐसा है कि so basically there is a famous female painter who shoots her husband 5 times and then never speaks about it to anyone ever again. ना ही पुलिस को कुछ बताती है, ना ही उसके फ्रेंड्स फैमिली को कुछ बताती है. जस्ट शी स्टॉप स्पीकिंग ऑल टुगेदर एंड सो शी इज एडमिटेड टू अ मेंटल फैसिलिटी. एंड वहां पे उसको एक थेरेपिस्ट असाइन होता है हु इज वेरी, मतलब उसको ना बहुत सारे थेरेपिस्ट असाइन हो चुके होते हैं बट nobody can get her to talk. मतलब they try various methods to make her talk, to make her confess कि उसने क्यों किया, क्यों मारा उसके हस्बैंड को. बट मतलब none of those methods work. Then finally एक one जो अभी main character है of this story, that guy, that therapist gets assigned to her and he becomes very obsessed with making her talk. मतलब he's like कि नहीं, जब तक मतलब I will make her talk, वो बोलेगी. And then he does things and then like it's a very, मतलब मैं ऐसे explain नहीं कर पाऊंगी क्योंकि you have to read it to know it. But the twist is mind blowing in this book. You have to give it a read. This is also a very short book. I think all of those books that I suggested all are ranging between like I think 300-ish pages, 300 to 350 pages के books है. तो it's मतलब good books. You can give them a try. मतलब you have to give them a try. And I think कि at least one of these books will make you get into that reading habit because these are so good. I loved all of these books. So okay, I think that's it for today's video. ये मैं ना वीडियो बहुत छोटा रखने वाली थी क्योंकि I was like just मुझे 5 टिप्स देने हैं, 5 बुक्स रेकमेंड करने हैं, खत्म. But clearly that's not the case. Anyway, I hope you like this video and if you need any more recommendations from me from the thriller genre, then please let me know in the comments because मैंने बहुत books पढ़े हैं ये genre के and I have a lot more to recommend. But yeah, this is it for this week's video. I'll see you in the next week. Bye bye. Please like, share and subscribe.